everyone, welcome back to my channel. I'm Swapnil Mishra and I hope you're all doing great at home. Today I've created this smoky look for the tired face, and this will go with any kind of outfit, whether it's denim or a kurti. You need to accessorize yourself and it'll go with anything you want. Sorry for being MIA for 2 weeks now, but I was not well. But today I thought I should get the video up, so here it goes. So if you want to know how I got this look, let's get started. First I'm going to start with a clean face and I'll use the toner afterwards. Toner is very important for the face. जब हम face धो लेते हैं हमारे pores खुल जाते हैं and toner helps to calm them down. For tired eyes, I am going to use an eye drop. आप कोई भी eye drop use कर सकते हैं. It'll help with the redness in the eyes and आपकी eyes, they'll look alive. Then I'm giving a little pat to my face. जो भी puffiness होगा, it'll go away and it'll freshen up the face and eyes. So हल्का हल्का massage I'm giving it to my face and eyes. Then I'm going to use lactocalamine lotion, and this is a really good lotion for sensitive skin also. It calms down, it soothes the skin, it is a little cooling. Calamine helps against the sun, and I'll massage it into the skin very gently. Then I'm going to use this Revlon Illuminance Creme Shadow, and I got it from my sister. She gifted it to me, and you might not find it in India, so it's okay. You can use any cream shadow that's of your eyelid color, and आप उसको place कर सकते हैं. And you can also use a concealer very lightly. थोड़ा सा even out करने के लिए I'm using this shadow. If you don't want, आप अपने normal eyelids पे भी इसको direct हम look पे जा सकते हैं. इसको gently pat कर लूँगी दोनों lids पे. Then I'll use Maybelline New York Colossal Kajal. I'll warm it up on the back of the hand. And then मैं इसको बहुत roughly apply करूँगी because मेरे को अभी smudge out करना ही है, so there's no point of being very accurate. Lower lash line पे भी apply करूँगी, and I am just staying on the outer edges of the eyes. मैं inner edge पे नहीं आऊँगी because it'll be very messy if I apply there. बाकी we'll control it with the help of a brush later. अच्छे से apply करके then I'll use Vaseline. You can use any lip balm also which is gentle on the eyes, and use it on the brush या फिर Q-tip जिससे आपको smudge out करना है. आप एक Q-tip भी use कर सकते हैं. What Vaseline does is ये बहुत gentle कर देता है. ये बहुत ही easy transition करता है. कोई भी harsh lines नहीं रहती इसकी help से जब हम smudge करते हैं तो. और आइज़ पे भी स्ट्रेन नहीं पड़ता, स्किन पे स्ट्रेन नहीं पड़ता. मैं इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी. देखिए, इट माइट लुक वेरी लाइट टू यू बट इट इज़ देयर, एंड इट इज़ गुड टू अप्लाई इन लेयर्स रादर देन अप्लाइंग ऑल ऑफ इट एट वंस. फिर आपके पास स्कोप रहता है इंक्रीज़ करने का, बट आप बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लेंगे तो वो बिगड़ने के बाद यू कैन नॉट डू एनीथिंग. आप उसको पूरा हटाना पड़ेगा. सो आई एम स्मजिंग इट वेरी लाइटली, वेरी जेंटली. एंड देन आई विल यूज़ दिस Maybelline New York द न्यूड्स आई शैडो पैलेट. दिस इज़ अ गुड पैलेट, न्यूट्रल पैलेट, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है. इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल. एंड देन मैं डार्क ब्राउन लेकर पैट कर रही हूँ उसी लाइन पे. I'm tracing all that eyeliner you have used. इसके ऊपर मैं पैट कर रही हूँ, and I'm not rubbing everything. Smoky eye does not mean आपको पूरा black कर लेना है अपने eyes को. It is a mixture of darkness and your eye color. आपका जो आई कलर है
just go a little darker on the eye. उससे थोड़ा सा dark shadow लेकर you smoke it out. You don't go black all of it. And I'm using this light color on the eyelid where I've placed the cream shadow just to set it. Although those cream shadows set matte, but not just a precautionary effort. मैंने इसको लगा लिया है जहाँ जहाँ मुझे लगा. Then I'll use a wet wipe and कहीं पे भी मुझे लग रहा है मुझे शेप देना है या फिर थोड़ा सा फॉल आउट है, I'll use this and clean it out. I have a habit of doing this because आई shadows के बाद थोड़ा बहुत फॉल आउट होता है which we are unable to see but there is. And then ब्रश की हेल्प से जिससे मैंने ब्लैक वो डार्क ब्राउन पुट किया था कलर, मैं इसको हल्का सा शेप दे रही हूँ विंग टाइप का ताकि थोड़ी आइज़ अपलिफ्टेड लगें. देन मैं अपर लैश लाइन को कोट करूँगी विद द हेल्प ऑफ काजल. इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर मी but that's why I'm doing it holding my eyelid up. It gives the lid dimension और eyelashes heavy लगती हैं without even applying any mascara. Then I'm using this cream shadow and I'll be applying it on the upper portion of the eye near the brow bone. थोड़ा lightness लगेगी तो eyes will look more awake. It is very important for smoky eye and all to have a lightness around them. Then मैं ये मिलानी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ एंड उसको मैंने सीरम में थोड़ा सा मिक्स कर लिया है टू लाइटन द कवरेज. आई डेंट वांट मोर ऑफ कवरेज. आई लाइक स्पॉट कंसीलिंग रादर देन यूजिंग heavy फाउंडेशन. एंड देन आई यूज़ अ ब्रश टू. मैं अच्छे से ब्लेंड करके इसको आई जस्ट वॉन्टेड इवननेस इन द स्किन. मैं बहुत कवरेज नहीं चाहती हूँ फाउंडेशन से, सो आई एम यूजिंग इट बिकॉज माई स्किन वॉज ओके एट दैट टाइम. आई जस्ट नीडेड टू स्पॉट कंसील, सो आई डू इट विद द हेल्प ऑफ अ कंसीलर लेटर. एंड नाउ आई एम ओनली यूजिंग फाउंडेशन वेरी लिटिल. आई मीन आई थिंक आई हैव यूज्ड हाफ अ पम्प एंड इट डज द ट्रिक फॉर मी. And then I'll use Fit Me concealer in the shade medium Moen. This is more or less my skin shade, so it is good for spot concealing. मैं हर जगह spot concealing करूँगी and with the help of fingers मैं इसको blend कर लूँगी. This is a very helpful tip if you don't want to look cakey and you don't want to use much of products, I mean foundation. Foundation by its name actually should do what it does. It should only give you foundation for further makeup. तो आपको बहुत ज़्यादा उसी से कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव कंसीलर्स फॉर देम एंड कंसीलर्स का नाम भी कंसीलर इसलिए है बिकॉज दे आर यूज टू कंसील इम्परफेक्शंस ऑन योर फेस. एंड विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. फिंगर्स डू अ ग्रेट जॉब. एंड फिर उसके बाद मैं स्पंज से इसको जहाँ पे मुझे लगेगा ज़रूरत है आई विल डू इट. आई एम यूजिंग वॉशेबल ब्लैक Maybelline New York Total Temptation mascara, and this is washable because I don't like waterproof mascaras because they're not good for lashes. And I'll apply it. Maybelline mascaras are awesome. I love them. I never use any other mascara. Yeah, I actually use one more. No, I think two more. One is from Flower Beauty, the Lash Warrior mascara, that is also good, and from L'Oreal Paris, and that's it. Then I'll use Fit Me concealer for highlighting in the shade Sand because आपने smoky eyes की है and it is a little darker. You need upliftment in the face, so we use a little highlighting concealer. बहुत हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा. You can always go back and use more, but starting में बहुत लगाने की ज़रूरत नहीं है. I'll use a smaller brush for more precision and मैं इसको blend कर लूँगी. After using this concealer, you'll actually feel instant uplift in the face and your face will look more alive.
Actually, this kind of makeup, when you don't want to use much of a product, it is more time taking, and अगर बहुत ज़्यादा product use करते हैं, it looks caked up, तो बहुत अच्छा भी नहीं लगता है. तो when you use less makeup, it is more difficult to look natural wearing a makeup. So take your time, blend everything very well so that it looks good on your skin, rather than सब कुछ बहुत सारा यूज़ कर लिया and आपके ऊपर लगे कि you're wearing 10 layers of makeup. No. Take everything in small amount and then build it up if you need. Then I'm going to use Maybelline New York Fit Me Loose powder in the shade Light. This is a really good powder. बहुत light है and it gives good coverage. It does not sit on your skin, it blends and बहुत अच्छे से settle down हो जाता है. ऐसा लगता नहीं you have applied any kind of powder. I usually use this, and in case when I'm very oily I use the Rimmel one, otherwise I generally use this powder only. Then we'll use the bronzer to bring back a little color on our face. My favorite bronzer, Physicians Formula, in the shade Sun Kissed. And बहुत lightly, बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ मैं, just to bring back the color. I'll use this bronzer on the usual places जहाँ मुझे natural bronziness चाहिए. Before you start your makeup, हमेशा look at your face. जहाँ पे natural pinkiness है, जहाँ पर natural bronziness है, उसको आप notice कीजिए. Then after that, it'll be very easy for you to use the base makeup and go on with it. Then I'm going to use this brow pencil from Maybelline, and I'm just filling the brows where I have sparse spaces. Otherwise, I'm not giving any bushiness to it. I'm just going with the natural lines and then brush it off, and it'll be good. Then for a little flush of colors, I am using Flower Beauty blush. This is a really nice blush and it gives flush of colors which looks like really natural and within kind of color. And I have a brownie, and then I'm going to use shade Hype from K Beauty lip liners. These are really good lip liners, and you should always use lip liners, and it gives your lips more definitions. And फिर उसके बाद आप लिपस्टिक को टेंट की तरह भी यूज़ करेंगे, look good on you. And I usually do that with the nude colors especially. And then lip liner के बाद I'm going to use Faces Canada Glam On Moisture Rich Lipstick in the shade Lovely. Very lightly, बहुत ज़्यादा नहीं, just like a tint as I said before. This is the final look. I hope you enjoyed the video, and if you did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And I'll be uploading more videos, and I'll see you in the next one. Bye.